Hello everyone, welcome to CLAT Maestro. I am Anmol Sai. I am the founder of CLAT Maestro and I secured a rank of 39 in my CLAT 2022 examination and I'm currently studying in my second year BLLB course at the National Law School. So in this session, we'll be discussing about the preparation strategy for CLAT 2025, 2026. So basically, hopefully all of you are aware that CLAT has 120 questions. It has five sections, that is English. We have GK, that is current affairs. We have legal. We have logical, that is your critical reasoning. And we have quantitative techniques, right? So we'll be discussing a layout plan, okay, for this whole year as to what are the sources you need to follow, what are the things you need to take into consideration. So yeah, we'll keep it short and yeah. Okay. So the first things first is that importance of language. So importance of language is very, very, very important. Why? Because the whole paper is language based, right? So whole paper is in English, take care. And it's difficult to manage the exam without the knowledge of English. And not only, I'm not only saying that you need to only read English, I am saying that you have to read, you should be able to write, should be able to speak, etc., etc. So English has to be there in every aspect of your life. Especially this is your uh, journey to a law school, right? So in your law school, you need to have that speaking and communication skills, writing skills, and reading skills. Okay. Okay. So how to do it? So basically, you have to start with newspapers. You must have heard about people कि बोलते हैं कि यार newspapers are very 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 important. Yeah, newspapers are important because except maths, all of the sections, be it English, CR, legal, and GK, newspapers help you in every section except maths, right? So first, you can start with Times of India. If you don't have an habit of reading the newspaper, then you can shift to The Hindu because The Hindu might be difficult and complex. The language might be complex. So you can read The Hindu or The Indian Express. Okay. If you're a fresher, you can choose between them. And if you're a dropper, you should read both of them, right? And personally, I feel The Hindu has a more edge over in Express, especially because it's uh, inclination toward the pattern of CLAT because they have this opinionated articles which help you in getting a sense of how arguments, how writings work. So yeah. Also, you can go to the Economic Times, especially those who feel like कि economy के articles उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें they feel in uncomfortable. You can go to that, right? Okay. So newspaper is a daily basis thing. So consistency is very important here, right? And also you can go to read books of authors. So you have 12 months currently, not 12 months precisely, you have 11 months. Okay. So mostly in the first week of December, your exam will be there. So you can start with books now. Okay. I know you have boards. Most of you will have your boards. So please uh, read. You can start with these books like Khalid Hosseini, George Orwell, 10 Judgments That Change India by Zia Modi, 21 Lessons for the 21st Century. You can start with these books. Okay, so until, I mean, so till March, okay, till your boards, you can try these books. Okay, after June, July, you should focus mostly on newspapers. Okay, the books are a long-term plan. Okay, short-term plans are your newspapers, and then websites, movies, mu- music and podcasts. So websites like aeon.com, Psychology India, Wire, Mint, movies like Start. So you can start with Oscars. So you have to watch good movies. Okay. So you start doing it. Okay. So when you surround yourself with the language, the language will be inside you, right? And you will be better and you will be comfortable with the language, right? Okay. Basics. So if we talk about the basics of preparation for CLAT exam, is to first understand what is the difference between preparation for mocks
preparation for CLAT exam. So mocks are your tools for assessment, right? You test yourself that how would you perform in the exam, right? Right. So kindly understand that for the first 2 or 3 months, you will only study. Okay, you don't have knowledge about anything currently. So you should study and have some build-up of the concepts. Okay. So until unless you are done with 10-20% of the concepts, you should not start with mocks. At least 20%. Okay. So after you're done with 20%, say after March, precisely after your boards, okay, you should start with giving mocks. And kindly understand, after you're starting with mocks, first try to understand that mocks ka preparation and preparation for your CLAT exam in general are different. Okay, mocks have to be consistent, so you consistently give your mocks, but you prepare for the CLAT exam in the sense कि you prepare for knowledge, that is different. ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि sir haven't done with my concepts, I haven't revised things, so I should not give mocks. No, mocks are your test of your personality. ठीक है, how do you perform in the main exam, how do you attempt questions, how are your accuracies, what is your time, what is your speed, etc, etc. So these are different things. And knowledge gathering is different. It's a different thing. Okay, coming to my second point, freshers versus dropper. देखो, फ्रेशर की प्रिपरेशन अलग होती है, ड्रॉपर की प्रिपरेशन अलग होती है. Why? Because as a fresher you have less time, you have schools, you have, so some have colleges, so you manage your schools or boards with your CLAT preparation. And droppers, they have a sole objective to crack CLAT. Okay, so it's a different thing in the sense that freshers have a burden of the school and droppers have different burdens, right? So for freshers I would advise that make the most out of the things. Take it, the things you have. For example, you have only have 2 hours, 2 to 3 hours to study, while droppers have 8 hours. So regardless, you can't say कि अच्छा droppers ज्यादा पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए. तो 2 से 3 घंटे हैं आपके पास, बेस्ट यूटिलाइज करो इसका. ठीक है, यूज इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट. ठीक है, रीड करो. ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो. ठीक है, एक ही 2 सेक्शन पढ़ाओ, पढ़ो डेली, नो वरीज. बट ऐसा नहीं कि उसमें आप कॉन्सेंट्रेशन लूज कर रहे हो, नहीं. ठीक है, जब कम समय है तो प्रेशर भी ज्यादा है. एंड आई लेट मी जस्ट टेल यू, फ्रेशर्स, सो आउट ऑफ 100%, 60% to 70% of the students who crack CLAT are freshers. So it's just a data, but it's no disrespect to the droppers. But still, for droppers, आपको जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं. ठीक है, 8 से 10 घंटे जितना पढ़ सकते हैं, पूरा दिन आपके पास, राइट? ओके. क्लैट वर्सेस ओलेट्स, गाइस, ऐसा नहीं होता कि क्लैट की प्रिपरेशन अलग होती है, ओलेट्स की प्रिपरेशन अलग होती है, बट साइमल्टेनियसली चलती है. ठीक है, सो क्लैट में कुछ चीजें आती हैं जो कि ओलेट्स में नहीं आती, ओलेट्स में कुछ चीजें आती हैं जो कि क्लैट में नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, क्लैट में आपके एनालिटिकल रीजनिंग कम होती है. ठीक है, यू डोंट हैव दिस वन लाइनर क्वेश्चंस इन मैथ्स, यू डोंट हैव दिस प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इन लीगल, सो यू हैव दिस क्वेश्चंस इन स्लैट, एलसैट, एमएससीटी में आता है. तो ये सब चीजें, बट आप जब लीगल करते हो तो आप साथ में करते हो. प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन भी करना है, पैसेज के क्वेश्चन भी करना है, साथ में करना है, राइट? ओके. नोट मेकिंग, गाइस, होपफुली आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो माय दिस पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड मेंटरशिप. सो बेसिकली आप जब भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है, तो वहां के क्लासेस को अटेंड करो अच्छे से, नोट्स बनाओ, वॉट एवर द फैकल्टी सेज. ठीक है, एंड डाउट भी सॉल्व करो. ठीक है, व्हेन यू सॉल्व questions, when you understand concepts, obviously you have doubts. If you don't have doubts, that's an issue. ठीक है, तो उसको ध्यान रखें. ठीक है, and to that matter, we have started our own course, that is the CLAT Lakshya batch. We just starting soon. So for enrollments, for any doubts, you can uh, contact me or my team by the given number or website. So you can visit our website too. तो वहां से आप देख सकते हो. एंड या आपको अच्छा लगे तो आप डेमो क्लासेस देखो, एंड आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हो, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन वाइज एनालिसिस. ठीक है, फर्स्ट, जो कि बेसिकली इंग्लिश सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो डेली रीडिंग हैबिट मेरा पिछले स्लाइड से कनेक्टेड है, तो यू हैव टू हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग डेली, दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकंड, देखो, आपको अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझना है
तो आपको सेंटेंसेस समझने पड़ेंगे. फॉर सेंटेंसेस यू नीड टू वर्क अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी, द हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. ठीक है. तो ऐसे नहीं कि रैंडमली whenever you get some new words write it. No, start with some basics in the sense you can start with materials. कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड होगे, they provide you with this list of words which you can learn. So these list of words are from different sources. They could be asked in exam, they could be asked in different exams. So different high frequency words आपको एक list out होते हैं, तो वो एक बार आप पढ़ सकते हो. They can have this book Word Power Made Easy by Norman Lewis. इसमें session wise divided है, so you can get a sense of how to learn words by root methods or how to learn words by mnemonics. Different methods of interactive methods of learning words. So English is easy is there, 30 days to powerful vocabulary is there. And also you can visit website called www.vocabulary.com. यहाँ से आप अपने वर्ड्स को चेक भी कर सकते हो कि आपको वर्ड्स कितने याद रहते हैं, राइट? ओके. देन ग्रामर गाइस, सो आई होप कि सब जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, दे आर एटलीस्ट 10th पास. ठीक है, कोई 11th में हो सकता है, कोई 12th में हो सकता है, बट आई कांट एक्सपेक्ट 10th स्टूडेंट टू वॉच दिस. सो 10th स्टूडेंट्स का आई होप कि आपका ग्रामर तो अच्छा ही होगा. ठीक है, तो आप ग्रामर के कंसेप्ट बताएं. यू नो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, you know what is subject verb agreement, figures of speech, etc etc. So you can go through this book, concepts revise karo and practice karo questions यहाँ से, right? Reading comprehension, so these three are the build up for reading comprehension. CLAT में बस reading comprehension आता है. तो to do that you have two sources, mainly coaching material or mocks, and there is a book called Proficiency in Reading Comprehension by Aryan Publications. Guys, ये किताब आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इट्स जस्ट ऑप्शनल. ठीक है, तो फिलहाल आप मॉक्स से करो. जब भी मॉक्स तो आप स्टार्ट करोगे अगर मार्च से, तो आई मीन जस्ट बाद में कभी कोई जरूरत पड़े तो खरीद सकते हो, राइट? सो दिस इज योर इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स, is the second section which has 30 questions, and English had 25 questions, right? We didn't discuss, it has 25 questions. Okay. तो पहला तो क्या करो यार, जाके क्लैट सिलेबस पढ़ो. कहां से? www.consortiumofnlus.com. अभी इस वीडियो को पॉज करो एंड गो एंड विजिट द वेबसाइट. ठीक है, वहां पे आपको एक एलिजिबिलिटी एंड गाइड, सिलेबस एंड गाइड मिलेगा. वहां पे जाओ एंड जीके की कम से कम सिलेबस पढ़ो. बाकी सब सेक्शन के आप पढ़ो या ना पढ़ो, आई डोंट केयर, बट करंट अफेयर्स पढ़ो. करंट अफेयर्स का, क्योंकि वहां पे लिखा है कौन से वहां पे 4 हेड्स हैं. ठीक है, कमेंट करना मुझे, व्हाट आर द हेड्स, डिफरेंट हेड्स ऑफ विच द करंट अफेयर्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट? सो डिफरेंट 4 हेड्स हैं, एंड वो 4 हेड्स या you need to analyze it by the help of last 4 not 5 years. So after the pattern change of 2020, since the 2020 paper, 2020 हो गया, 2021, 2022, 2023, 2024. So 4 papers, and in addition you can go through the sample papers as well. So ये 5 साल के पेपर आपको एनालाइज करने हैं with regard to the CLAT syllabus, and देखना है कि which are the topics which are important. तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, when you read the newspaper, it's very important to identify the important topics. You can't just blindly read each and every topic, right? So topics which are important, you need to develop a skill as to how to identify. I can't teach you. ठीक है, तो what you can do is firstly go through these two methods. Thirdly, you have to attend classes. ठीक है, attend class आप जब attend करोगे, you can get a sense that how I identify a topic, which topics I am covering, and how I'm linking it with the static parts, because current affairs is there, okay, but it includes GK, general knowledge. ठीक है, बट जनरल नॉलेज इन जनरल नहीं आएगा कि आपको रैंडमली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब रैंडमली पूछ रहे हैं कि अकबर का नाम, मतलब पूरा नाम क्या था, नहीं पूछेंगे आपसे, राइट? सो करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट. जीके कौन सा इंपॉर्टेंट है? जीके विच इज लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, तो वो आप कवर करो, राइट? एंड मॉक को एनालाइज करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मॉक्स हो गया, मैगजीन्स में क्वेश्चन होंगे, वो आप सॉल्व करो. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके एटलीस्ट यू कैन गेट अ सेंस दैट आपको कितना पढ़ना है, राइट? हो सकता है आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ा, नहीं वो नहीं पढ़ा, तो आप उसके बाद कवर कर सकते हो आप, बिकॉज आप जब गलतियां करते हो ना, व्हेन यू मेक मिस्टेक्स यू लर्न बेटर. सो दैट्स द थिंग, राइट? ऑल्सो रिवाइज 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 गाइस, बिफोर एवरी मॉक, बिफोर एवरी
आई मीन इन अ मंथ, इन 2 months, रिवाइज योर नोट्स। मतलब यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया मैंने, सब कुछ का सिंथेसिस आप इस नोट्स में करोगे। मेक कॉपी, मेक अ रजिस्टर, मेक नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, ठीक है, जो गलतियां हो रही है उसको लिखो, एंड इसको रिवाइज करते चलो। टाइमली रिवीजन इज रिक्वायर्ड। नॉलेज इज वन थिंग, आपने एक्वायर कर लिया नॉलेज, फाइन। रिटेंशन इज अनदर। कितना चीजें याद रहती हैं वो इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो आपने बना लोगे, 400 500 1000 पेज का बना लोगे, बट रिवाइज कितना करते हो, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, राइट। ओके, थर्ड, लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में दो चीज है। पहला तो चीज है यार कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, यू गेट अ सेंस ऑफ द लीगल लैंग्वेज, ठीक है। लीगल लैंग्वेज आपको पता चलेगी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आप पढ़ोगे, आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन जनरल ओरिजिनल नहीं पढ़ना, बट आप उसका जो सेकेंडरी सोर्स है दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मतलब व्हाट इज इट्स ओपिनियन ऑन डिफरेंट पार्ट्स। सो अभी रिसेंटली आप देखोगे तो मैरिज इक्वालिटी जजमेंट था, ठीक है। देन यू हैड आर्टिकल 370 जजमेंट, ठीक है, 370 को चैलेंज किया गया था, ठीक है। सो यू कैन रीड दीज जजमेंट्स। ओके, सेकंड, आप क्या करो, आर्टिकल्स पढ़ो, बार एंड बेंच एंड लाइव लॉ, एंड ऑल्सो वायर, द वायर। वायर में एक लॉ वाला सेक्शन होता है, वहां पे पढ़ो। तो दिस एक्सरसाइज इज सिंपली मेंट टू फेमिलराइज योरसेल्फ विद द लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज इज डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है, राइट। तो वो आपको ध्यान से करनी है। दूसरा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। दे डोंट टेस्ट यू, क्लैट कंसोर्शियम डजंट टेस्ट यू ऑन हाउ मच यू लर्न नो द लॉ, ठीक है। नोइंग पार्ट आप लॉ स्कूल में करोगे। फिलहाल तो दे ट्राई टू टेस्ट कि अगर मैंने आपको एक प्रिंसिपल दे दिया कि दिस इज द लॉ, इफ आई गिव यू दिस इज द लॉ, देन आई ऑल्सो टेल यू व्हाट आर द फैक्ट्स इन अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। देन कैन यू अप्लाई एंड रीच अ राइट डिसीजन, दैट्स इट, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक्स आपको करने चाहिए, मेनली टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फैमिली लॉ। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डू फ्रॉम एपी भारद्वाज, देयर इज अ बुक एपी भारद्वाज, देयर इज अ पियर्सन का पब्लिकेशन का किताब है, तो आप ये पढ़ सकते हो। एंड प्रीवियस क्वेश्चंस, आई मीन दिस डजंट मैटर कि आप बस लास्ट 5 साल कर रहे हो जो पैटर्न चेंज हुआ, नहीं, पैटर्न चेंज से पहले का भी क्वेश्चंस रेलेवेंट है, प्रिंसिपल फैक्ट्स के क्वेश्चन से एटलीस्ट यू कैन गेट द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप मॉक से कर सकते हो, राइट। ओके, फोर्थ, लॉजिकल रीजनिंग। फर्स्ट तो क्रिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग भी तीन तीन टाइप के होते हैं। एक है स्टेटमेंट बेस्ड, एक है पैरा बेस्ड, एंड एक है पैसेज बेस्ड, जो कि क्लैट में आता है। स्टेटमेंट बेस्ड, पहला आप क्या करोगे, assumptions हो गया, देन कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर्स को आप पहले प्रैक्टिस करोगे एम के पांडे से। यहां से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। लेटर्स सेम है, बस फर्क ये है कि उल्टे हैं, मतलब यहां पे मैं बता रहा हूं, बट पॉइंट है कि दोनों बहुत ही सिमिलर है। बट दैट इज द इश्यू विच क्लैट एस्पिरेंट्स डू, वो दोनों को सेम समझने लगते हैं, नहीं, सेम नहीं है। आरसी इज लेस डिफिकल्ट देन सीआर, सीआर इज मोर टेक्निकल, सीआर इज मोर अबाउट रूल्स, ठीक है। तो वो चीज है, ऑथर का ओपिनियन यहाँ पे बहुत मैटर करता है, बट यहाँ पे ऑथर का ओपिनियन नहीं, व्हाट आर द फैक्ट्स से, व्हाट आर द प्रेमिसेस से, व्हाट आर द कंक्लूजन से। तो प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन्स का रिलेशनशिप क्या है, तो वो बहुत टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल है, डीप है। तो यहाँ पे डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो यहाँ पे कंसेप्ट का होना एंड पैसेज का सही समझना वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, सो आफ्टर डन विद स्टेटमेंट बेस्ड, यू कैन गो टू पैरा बेस्ड। पैरा बेस्ड जो कि आप जीमैट से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जीमैट। एंड कंसेप्चुअल के लिए आप मैनहट्टन पढ़ सकते हो, राइट, दिस दिस द बुक। एंड उसके बाद फिर आप पैसेज बेस के लिए मॉक्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों का आपने जितना अच्छे से किया होगा, उतना ही हेल्प आपको पैसेज बेस में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एनालिटिकल रीजनिंग क्लैट में नहीं आता है, अगेन पहले आता था, अब ये बिल्कुल नहीं आता। बट सिंस आप ओलेट्स के लिए तैयारी करते हो, तो आर एस अग्रवाल एंड एम के पांडे दोनों ही किताब अच्छी हैं। आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसको आप कर सकते हो, राइट। फिफ्थ, लास्ट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मेनली ये लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो यू हैव 10 क्वेश्चंस योर, तो 2 passages ईच, ठीक है। तो टू 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 और 3 पैसेज डिपेंड करता है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ लिया। तो देयर इज अ किताब, बुक कॉल्ड अड्डा 247।
तो अड्डा 247 कैन गो थ्रू, यहाँ से आप डेली के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इज नथिंग, सो दे कुड बी केसलेट्स, ठीक है। आई मीन नथिंग इन द सेंस कि बेसिकली इफ यू आर डन विथ योर क्वांट्स कंसेप्ट्स, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी टॉपिक्स अगर आपने कर लिया है, राइट, एंड यू आर डन विथ सम 100 200 300 क्वेश्चंस, तो फर्स्टली यू आर डन विथ ओलेट्स प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। Secondly, you will be done with your 80% of the preparation for maths. बाकी 20% बस पूछने का तरीका अलग है, जो कि DI है। So basically you have a bunch of sets here, bunch of data here, उसको इंटरप्रेट करना है, एंड 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट पूछने का तरीका, चीजें सेम है, राइट। कौन जैसा करते आ रहे हो वैसे ही करना है। So yeah, so this is my analysis of how to do your, I mean, how to start your preparation for this new session। 2025 के बच्चे एंड 2026 के बच्चे दोनों इससे हेल्प ले सकते हैं, राइट। एंड या यू कैन DM, not DM, you can mail me at Anmol Sai 03@gmail.com। You can call us at 9798914147, ठीक है। You can visit our website, that is www.clatmaestro.com। यहाँ पे आप जाके डेमो क्लासेस देख सकते हो, एंड देख सकते हो चीज़ें कि हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, राइट, एंड व्हाट इज़ आवर विजन। सो या, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया बट कोई ना। सो this is a video for how to prepare, and yeah, thank you so much. See you in some next video, and this is Anmol Sai signing off. Jai Hind, Jai Bharat.